हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिलिप लार्किन की पोम डिसेप्शन के बारे में। पोएट के बारे में हम पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज पोम को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। पोम को इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं उसके कुछ की फीचर्स। Deception, an intricate and ever-present aspect of human interaction, has captivated scholars and thinkers across various disciplines throughout history. It permeates the fabric of relationship, politics, and personal perceptions, blurring the boundaries between truth and falsehood. From the subtle illusions of appearance to the calculated strategies of manipulation, deception manifests in diverse forms, influencing narratives and shaping outcomes. In this poem, in this video, we will discuss the complexities, mechanisms, and profound effects of individuals and societies. चलिए पोम को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। Of course I was drugged and so heavily I did not regain consciousness until the next morning. इस लाइन में जो है स्पीकर एक्नॉलेज कर रहा है कि उसे ड्रग किया गया था, इतना ज्यादा ड्रग किया था कि वो अनकॉन्शियस था until the next day. I was horrified to discover that I had been ruined. पोएट जो है वो कह रहा है कि जब उसने कॉन्शियस गेन किया तो वो हॉरिफाइड था रियलाइज करके कि उसके जो मतलब उस वो ड्रग जो लिया था उससे बहुत डीपली अफेक्ट हुआ और उससे बहुत हार्म हुआ इन सम डे एंड फॉर सम डेज आई वाज इनकॉन्सोलेबल। स्पीकर जो है वो एक्नॉलेज कर रहा है जो उसने ग्रीफ और डेस्पेयर फेस किया है वो बहुत इंटेंस है, बहुत एक्सट्रीम है और उसने बहुत सारे दिन के लिए फेस किया और वो मतलब कंफर्ट नहीं फाइंड कर पा रहा था, पीस नहीं फाइंड कर पा रहा था एंड क्राइड लाइक अ चाइल्ड टू बी किल्ड और सेंड बैक टू माई आंट। स्पीकर जो है वो बहुत डिजायर कर रहे हैं कि वो यहाँ से एस्केप हो जाए अपने करंट सिचुएशन से, इधर या तो उसको मार दिया जाए और या उसे उसकी केयर ऑफ आंट, उसके आंट के पास उसे भेज दिया जाए। इस डेस्परेशन जो ये डेस्परेशन है इसे क्या एक चाइल्ड की प्लेयर से कंपेयर कर रहे हैं कि मतलब चाइल्ड जो है वो प्लीड कर रहा है कि मतलब उसे उसके आंट के पास भेज दिया जाए। इवन सो डिस्टेंट आई कैन टेस्ट द ग्रीफ। स्पीकर जो है वो मतलब इतना दूर हो सकता है ओरिजिनल सोर्स से ग्रीफ के, बट उसकी इंटेंसिटी फील कर रहा है। बिटर एंड शार्प विद स्टॉक्स ही मेड यू गन। जो ग्रीफ है उसको बिटर और शार्प डिस्क्राइब किया गया है। जो पर्सन उसे एक्सपीरियंस कर रहा है उसे मतलब स्वलो मतलब उसको वो बात हजम करनी पड़ रही है और डिफिकल्टी के साथ। द सन्स ओकेशनल ट्रेंड द ब्रिस्क ब्रीफ, ये डिफरेंस है टू द फ्लीटिंग इम्प्रेंस जो सन के एंड द ब्रिस्क मूवमेंट ऑफ डेली लाइफ। वर्री ऑफ फील्ड्स अलोंग द स्ट्रीट आउटसाइड। जो नॉइस और एक्टिविटी हमारे एवरीडे लाइफ को है वो कंटिन्यू हो रही है आउटसाइड, सजेस्टिंग अ कंट्रास्ट विद द जो हमारे इनर टर्मोइल है उससे डिस्क्राइब और कंपेयर किया जा रहा है। Where bridal London goes the other way. London जो है usually associated with celebration and happiness. Bridal seems to turn away from the speaker's grief and light and unanswerable and tall and wide. वो जो है सिचुएशन जो है वो ओवरवेलमिंग है, inescapable light possibly representing exposure or scrutiny. Forbids the scar to heal and thrives. जो लाइट है वो प्रिवेंट कर रही है वूंड को हील करने से और जो फीलिंग्स है वो सरफेस हो रही है। शेम आउट ऑफ हाइडिंग ऑल द अनहर्ड डे। शेम जो है वो कंपेल्ड है टू रिवील इटसेल्फ थ्रू आउट द एंटायर डे विदाउट रिस्पाइट। Your mind lay open like a drawer of knives. स्पीकर जो है वो अपने माइंड को डिपिक्ट कर रहा है as being painfully exposed, vulnerable and filled with sharp cut thoughts or memories. Slum's years have buried him. स्पीकर जो है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं जो हार्श कंडीशन of slum living endured over many years have profoundly affected and overwhelmed the person being addressed. I would not dare console you if I could. स्पीकर जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी reluctance to offer comfort, perhaps recognizing the futility of attempting to alleviate such deep-seated suffering.
What can be said except the suffering is exact, but where desire takes charge, reading will glow erratic. Speaker जो है वो reflect करता है on the unpredictability of human response to suffering. While suffering itself is precise and consistent, the individual's desires and motivations can lead to unpredictable outcomes. For you who would hardly care that you were less deceived out on that bed. Speaker जो है वो suggest कर रहा है जो person suffer कर रहा है would not be concerned with the fact that they were perhaps less deceived or misled while lying in their bed. Then he was stumbling up the breathless stair to burst into fulfillment's desolate attic. ये जो line है वो contrast कर रही है suffering of the person addressed with someone else who, despite possibly being deceived or misled, eagerly seeks fulfillment, only to find it in a desolate and barren space. Quick devices. Sensory details. Larkin uses vivid imagery to create a sense of the physical experience of the event and its aftermath, such as the bitter drugged coffee and the feeling of grief. Metaphors. He employs metaphors to describe the emotional state of the character, comparing the woman's mind to a drawer of knives and a man's experience to a sense of emptiness. Symbolism. Objects like the light and scar can be interpreted as symbolic of the relentless reality of the event and a woman's attempt to heal. Detached yet intimate, the poem's narrative voice maintains a certain distance, yet it also delves into the intimate details of the character's experiences. Colloquial tone. The poem uses a colloquial tone, mirroring ordinary speech, which allows for a relatable and realistic portrayal of the situation. Themes. Suffering and desolation. The passages vividly illustrates the profound suffering and desolation endured by individuals residing in London slums. This suffering is depicted as pervasive, intense, and enduring. Isolation and solitude. A prevailing sense of isolation and solitude permeates the text as the speaker hesitates to offer solace or support, suggesting a feeling of disconnection or helplessness in the face of others' hardship. Inequity and deception. References to being less deceived hint at themes of inequality and deceit, underscoring the unequal distribution of knowledge and resources among societal strata. Such references highlight the inherent disparities and injustices entrenched within societal structures. Yearning for fulfillment. Despite the bleakness portrayed, there is a persistent theme of yearning for fulfillment or escape from the grim realities of slum life. However, this yearning is juxtaposed with the stark reality that fulfillment often leads to desolation and emptiness. Human resilience. Beneath the surface of suffering and despair, there is a subtle portrayal of human resilience. Despite facing overwhelming adversity, individuals exhibit resilience and endurance, demonstrating an unwavering determination to survive and preserve. जब हमने ये पोम पढ़ी तो हमें एक्सप्लोर करते डिसेप्शन has revealed its intricate and multifaceted nature permeating various aspects of human existence, from the subtle nuances of everyday interactions to the grand narratives of politics and power. Deception exerts a profound influence on individuals and societies alike. Throughout history, humans have employed deception as a tool for survival, advancement, and self preservation. However, its pervasive presence also raises ethical dilemmas and challenges notions of trust and authenticity. While deception may often be viewed in a negative light, it is essential to recognize its complexities and the role it plays in shaping human behavior and interactions. By understanding the motivations behind deception and its various manifestations, we can cultivate greater discernment and resilience in navigating the complexities of the world around us. थैंक यू। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई, कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं
और हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आने वाले वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द सोलफुल डायरी। थैंक यू।